like a Hellcat. वेलकम टू एच रिएक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारे होंगे। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका दोस्त हारिस और मैं हूं हसन। तो आज की वीडियो जो है जी इंडिया के बारे में है और वीडियो का टाइटल जो है जी 11 प्रूफ्स विच इंडिया इज़ नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। तो देखते हैं कि ये कौन से ऐसे मतलब इस वीडियो में 11 मतलब एक सबूत जो प्रूफ जो भी होते हैं जी वो दिखाए गए हैं कि मतलब और किसी कंट्री में नहीं है। तो वीडियो जो है ब्राइट साइड की, आप इनके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बिल्कुल और वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। Hey everybody, simple question for you. Who doesn't love traveling? Well, I sure do, and I've been to a lot of different countries, but there's one that will stick with me forever, India. Like I said, I'm pretty well traveled. I like to go abroad at least once a year, so I've got a lot of trips under my belt. But when a friend told me that I just have to see India, well, that's exactly what I did. I went in September, the last month of the summer monsoon. It was pretty dry and sunny, but with short rains here and there. The perfect weather for a traveler, if you ask me. Being the confident and well-experienced globetrotter that I am, I went there prepared. And I thought I was ready for anything. Boy, was I wrong. The pace, the people, everything hit me like a ton of bricks and didn't let go even when I was already back home. As soon as I stepped out of the airport, I felt dizzy. It could have been the heat, the jet lag, or the hunger in my belly. I assumed it was the latter. So I decided to head out for some authentic Indian food as soon as I throw my bags in my hotel room. Now, the food there deserves a big shout out. First of all, Indians eat very little meat. In fact, they have the lowest meat consumption per person in the world. Most of their dishes are vegetarian, and meat is replaced with soy meat. This is mostly because 80% of the population is Hindu. Probably like you, I'd always heard that Hinduism requires a strictly vegetarian diet, but that's not the case. It's just because they believe not eating minimizes the hurt they bring to other living beings. That's definitely one of the things I learned during my travels, and I was pleasantly surprised. Another thing about food in India is that it's all heavily spiced. That comes as no surprise, really, since India is well known across the world as the biggest spice producer and exporter. But there's one region that stands out exclusively in this regard, the state of Kashmir. It's home to the most valuable spice ever, saffron. Sure, this flower isn't unique to India. It also grows in Iran and Spain. Kashmir, however, produces the highest quality and the most expensive saffron in the world. The town of Pampur is literally built around saffron fields. There are actually 3 varieties cultivated there. There's Mongra, the most expensive one, that costs about $1,600 a pound. Then you've got Lacha, which, interesting enough, is less pricey at $1,000 per pound. Yet saffron farmers say it's the purest. And finally, there's Zarda. It's the cheapest, but only compared to other varieties, because $250 a pound isn't exactly what I call cheap. Anyway, India's spice game is definitely on point. So, I found a good place to eat, and as soon as I saw the menu, I remembered that Indian is also famous for its large variety of teas, or as the locals call it, chai. You should see the sheer number of options. I never thought there could be that many types of tea. If you're a tea drinker, I'm sure you know Darjeeling and Assam. But have you ever heard of Karnataka or Kangra? Does Munnar ring a bell? I don't blame you. I had no idea that these kinds exist either, and those are just the tea-producing regions. There's even more once you get into the types of chai by adding particular spices and herbs. Take, for example, masala chai, which is made with cinnamon, ginger, cloves, and herbs. I personally fell in love with butter tea. It's so thick and creamy. I could drink it by the gallon. Basically, you take tea leaves, some butter, hot water, and salt. Mix it all up and thank me later. With a full belly and plenty of chai pumping through my veins, I was ready for some sightseeing. I landed in New Delhi, so I spent the rest of the day walking around and taking in all the sights. Whenever I go abroad, I like to carry a little phrase book in the local language. Well, if you ever find yourself in India, you're gonna need a really big book,
because there are actually 22 officially languages there. English is among नहीं them. language So ज़्यादा I है was वहाँ okay पे। just sticking to मतलब that. official Those official 22 ज़्यादा बोली official जाने languages are just a drop in the huge linguistic ocean of the country. By different accounts, there are from 122 to 300 major languages spoken in India, as well as up to 1,600 lesser known ones. Basically, if you travel from one town to another, you'll hear people talking a different language. And if you happen to go to another state, you can forget everything you might have learned in your previous location. How they manage to communicate with each other is still beyond me. New Delhi was awesome. I wish I could talk more about it, but I had a lot to see. I did find time to take a train up to Amritsar and see the Golden Temple. How do I even begin to describe it? The whole thing is covered in gold and sits in the middle of a huge pool of water. This is where the tradition of langar takes place. Langar is a vegetarian meal that's given to any and everyone who comes to the temple, regardless of their background or beliefs. Just imagine, the Golden Temple provides a free meal to over 50,000 people a day. And on 50,000 special per day. occasions, it can feed up to 200,000. I got a free meal too, and it was really delicious. You can volunteer there as well. I did just that because I was in so much awe about the place, I didn't want to leave. What I actually regret is that I didn't get to see the Kumbh Mela in action. It's one of the greatest celebrations of India, and apparently it's a sight to behold. In 2011, so many pilgrims gathered in one place. ये उसके बारे में A बात कर रहा है congregation जो of मेला 75 नहीं लगता million त्योहार है हाँ, उर्स इनका उर्स जिसको हम अपनी from जुबान में space. कहते हैं This इनका year, कोई it's त्योहार है taking ना। place और from उस मतलब January उधर until हुआ है early तो- March. So if you've seen it with your own eyes, उस पे तकरीबन just know that I'm 22 so लोग हैं, jealous. से 2 लाख। In fact, whatever India does, it does it on a huge scale. For example, it has the largest number of post offices in the world. Wherever you go, you'll stumble upon one literally on every corner. The irony of this is that it doesn't really help the situation with delivery times. One Indian guy told me it's totally normal to wait for your package to be delivered in 2 weeks' time, even if it was sent from a nearby town. But hey, patience is a virtue. But it doesn't stop there. India places third in terms of the number of Guinness World Record holders. The world's fastest nose typer, the most expensive wedding ever held, and the most selfies taken together are just a few of the bizarre world records held in this country. What else? The largest railroad network in the world? Check. Well, almost, since the United States does technically have more. But anyway, India has built over 3.5 million miles of railroads, which, considering the smaller size of the country, still means easier transit within and between different locations. With that in mind, it shouldn't really be a huge surprise that Indian Railways is also the largest employer in the world. It has over 1 million employees, and considering the country's extensive railway network, these people are scattered throughout India. वीवर इसी के साथ वीडियो हो गई है ख़त्म। तो काफ़ी ज़्यादा ये ब्राइट साइड वालों की वीडियो थी, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो इसमें यही दिखाया गया कि वो ब्राइट साइड वालों ने जाके एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, कि वहाँ इंडिया में उन्हें कौन सी चीज़ें जो है ना, मतलब कि जिन्होंने अट्रैक्ट किया ब्राइट साइड वालों को। तो फर्स्ट जो पॉइंट था उसमें यही दिखाया गया कि डाइट के हवाले से था। हाँ, मीट कंजम्पशन जो है वो इंडिया में कम है, और बाकी जो है प्योर वेजिटेरियन, मतलब कि वहाँ पे ये प्योर वेजिटेरियन मतलब ज़्यादातर मतलब ये सब्जियां खाते हैं, और इसके अलावा और भी मतलब बहुत कुछ होगा, लेकिन सिर्फ मतलब यहाँ पे 11 चीज़ें जो थी मतलब उसको यूनिक लगी है दुनिया से बाकी से, तो उसने यहाँ पे उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और जिस तरह मतलब उनके स्पाइसेस के बारे में मतलब पूरी दुनिया में मतलब जो वो भेज रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर जो है इंडिया बहुत बड़ा है ना स्पाइसेस का, मतलब काफ़ी जो महंगे मसाले जात होते हैं वो भी इंडिया से जाते हैं। बिल्कुल, इंडिया में स्पाइसेस वगैरह खाए भी बहुत जाते हैं ना। बिल्कुल, तो मतलब इसके अलावा और हरीश और भी बताया गया मतलब उनके डाकखाना जो मतलब वो वाला जो है, मुझे तो डाकखाने वाला भी यहाँ ठीक है। पोस्ट ऑफिस मतलब सबसे ज्यादा तकरीबन इंडिया में, और उनकी तादाद तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा, मतलब 1,55,000। हाँ, 1,55,000, तो 1,55,015। हाँ, तो ये तकरीबन ये टोटल जो जी राइट फिगर था जो हरीश को अभी एग्जैक्ट याद था, तो ये इनके पोस्ट ऑफिस थे मतलब बहुत ज्यादा थे ना।
तो इसके अलावा लंगर वाला भी, लंगर वाला जो है वो मुझे बहुत मतलब अच्छा पॉइंट लगा है। मतलब गरीबों को जहाँ पे मतलब फ्री खाना एक दिन में तकरीबन बिल्कुल 50,000 लोगों को फ्री खाना खिलाया जाता है। तो वो कोई अगर ज्यादा मतलब के बड़ा प्रोग्राम हो तो मतलब उनका जो उर्स वगैरह होता है उसमें ज्यादा भी करते हैं वो, उसमें मतलब उसमें तो लोग ज्यादा अरस आते हैं ना, बाहर से भी आते हैं ना, मतलब पर डे का है ना, मतलब अगर बड़ा प्रोग्राम हो तो उसमें 2 लाख उसमें बंदे आ जाते, तो मतलब उनको कोई पैसे चार्ज नहीं होते जी, फ्री खाना। तो ये भी उस बंदे को वाकई एक यूनिक लगी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाहर कहीं यूरोप में ऐसा कहीं चैरिटी ये वो इतना बड़ा होगा। और ज़ाफ़रान का जो बताया हाँ, ज़ाफ़रान आप देखो ना, उसने बताया वीडियो में तकरीबन सिर्फ 3 मुल्कों में मतलब इसकी पैदावार है। एक स्पेन का है, एक इंडिया के इस कश्मीर में था, और तीसरा इटली था या पता नहीं कौन सा था, लेकिन जो सबसे यूनिक चीज है ना, वो सबसे महंगा था वो ये कश्मीर वाला था, जो तकरीबन $1600 हाफ केजी तकरीबन, मतलब कि वो 3 वैरायटी बिल्कुल ये बात है। और काफ़ी अच्छा वो भी पॉइंट मुझे लगा है। और इसके अलावा भी आप देख लो वो जो रेलवे एम्प्लॉइज का बता रहे हैं, हाँ रेलवे एम्प्लॉइज उनके मतलब सबसे ज्यादा हैं तकरीबन, कितने बता रहे थे 1 मिलियन उसके तकरीबन, मतलब बहुत ज्यादा है ना यार, 1 मिलियन मतलब एक रिकॉर्ड है ना, मतलब बहुत ज्यादा मतलब रेलवे में मतलब रेलवे से अपना काम ले रहे हैं। और मतलब बहुत कुछ था, ये तो सिर्फ मतलब 11 थे, तो हमने जो चंद एक आपको मतलब उन पे बताया है। तो काफी अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव थी। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को आप ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।